वेल फोक्स, टुडे आज मैं आप लोगों के लिए जो कुछ भी लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ये जेई एडवांस का 2007 का पेपर है जो कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आपको इसका मैं सोल्यूशन आपके सामने करने वाला हूं। पेपर ओल्ड जरूर है, लेकिन ओल्ड पेपर जो भी जेई एडवांस के थे उन सभी के उस तरह के क्वेश्चंस जो हमारे टाइम में उस टाइम में आते थे, आज मैं देख रहा हूं कि जेई मेंस में उसी तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं। सो जेई मेंस का आप एक बार पहला अटेम्प्ट दे चुके हो, दूसरा अटेम्प्ट जो है ना अप्रैल के महीने में आने वाला है, तो उस लिहाज से भी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप बहुत अच्छी तरीके से देखें। जो कुछ भी मैं आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें बता रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखें। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी जरूर बजाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हम जेई मेंस और जेई एडवांस से रिलेटेड चीजें ही बेसिकली लेके आते हैं, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का ये पेपर क्या है। तो जेई एडवांस 2007 का जो पेपर है उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे है। पॉज करके आप पहले तो इस क्वेश्चन को आराम से देखिए। मैं भी आपके साथ इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं। A resistance of 2 ohm is connected across one gap of meter bridge length इतना, unknown resistance greater than 2 is connected across the other gap। तो आपका भाई क्वेश्चन ये है कि आपका ये 100 सेंटीमीटर का वायर है, रेजिस्टेंस वायर। इसमें एक तो आपने 2 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया और एक आपने दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ दिया, और ये इसका सपोज नल पॉइंट है। ऑफ कोर्स यहां गैल्वेनोमीटर होगा। नाउ सपोज दिस इज द नल पॉइंट, हम मान लेते हैं दिस इज एल है, तो नेचुरली दिस 100 माइनस एल हो गई, और आपको पता है तो ये क्या हो जाएगा, आर बाई 2 इज नथिंग बट 100 माइनस, ये तो हमें पता लग गया। दूसरा क्या कह रहा है, व्हेन दीज रेजिस्टेंसेस आर इंटरचेंज, चलो भाई इंटरचेंज कर देते हैं। अब हमारा आर हमारा यहां पे आ गया और 2 ओम हमारा यहां पे आ गया, एंड सपोज नल पॉइंट इज दिस। सपोज दिस इज योर एल डैश, नेचुरली दिस विल बी 100 माइनस एल डैश। अच्छा भाई, एक इन्होंने कंडीशन यहां दे रखी है, अननोन रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन 2 ओम, तो यानी कि आर इज ग्रेटर देन 2 ओम। आर इज ग्रेटर देन 2 ओम का मतलब क्या हुआ कि हमारी यहां पे जो लेंथ है 100 माइनस एल इज ग्रेटर देन एल। करेक्ट। नाउ चूंकि 100 माइनस एल इज ग्रेटर देन एल यहां पे है, तो अब इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये कह रहे हैं कि जो बैलेंस पॉइंट है ये 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है। तो नेचुरली यहां पे ये अगर पहले एल था तो ये अब बेसिकली क्या है कि ये एल प्लस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये एल प्लस 20 सेंटीमीटर तो ये हो गया 80 माइनस
इसमें कोई प्रॉब्लम आपको समझने में आ रही है तो एक बार और एक्सप्लेन कर सकता हूं, या आप जो कुछ भी मैंने बोला है आप उसको फिर ध्यान से देखिए कि आर जो है ना 2 ओम से ज्यादा है, तो आर की जो लेंथ है वो आपकी जो है आर को, जो इसका लेंथ है 100 माइनस एल, यहां पे 100 माइनस एल विल बी मोर, एल विल बी लेस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. In this case also, L dash will be more than 100 minus L. L dash. बट चूंकि हमने इंटरचेंज किया है तो ये लेंथ अभी क्या हो गई L+20, क्योंकि 20 सेंटीमीटर हमारा जो पॉइंट ऑफ कहना चाहिए दिस थिंग है, क्योंकि पहले ये इधर L तो हमका कम था तो ये शिफ्ट हो गया है L, तो इवेंचुअली L+20 हो जाएगा और क्या हो जाएगा. ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो हमारा ये क्या हो गया, R upon 2 will be nothing but L+20 80 माइनस, ये आपको, इससे आपको दो इक्वेशंस मिल जाएंगे आपको. दिस इज 1, दिस इज 2. अब क्या है, अब आप कर सकते हो L+20 अपॉन 80 माइनस एल मस्ट बी इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल, और एल स्क्वायर प्लस 20 एल मस्ट बी इक्वल टू 100 इंटू 80 माइनस 80 एल माइनस 100 एल प्लस एल स्क्वायर. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, इसको काट देते हैं. अभी क्या बचा हमारे पास, यहां पे बच जाएगा 200 एल मस्ट बी इक्वल टू 100 इंटू 80, और एल विल बी इक्वल टू 100 इंटू 80 अपॉन 200, और दिस इज बेसिकली 40 सेंटीमीटर. तो एल हमारा जो है ना ये 40 सेंटीमीटर आ गया. करेक्ट. जब एल हमारा 40 सेंटीमीटर आ गया तो हम आर की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं. आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू हो जाएगी आर अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 100 माइनस 40 अपॉन 2, सॉरी 40, and this is 60 upon 40, or R is nothing but 60 upon 40 into 2, and this is 3 ohm. So this is your answer. Correct. Now दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है. In an experiment to determine the focal length f of a concave mirror by UV method, a student places the object pen A in front of this thing from the pole. The student looks at the pen and its inverted image from a distance. When the student shift his or her eye left and now appear to the right. ओहो, तो ये आपका बेसिकली देखिए ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन जो है ये आपकी जो है आपको क्या करने वाली है, यही इस क्वेश्चन का की है फॉर द आंसर. ये देखिए ये x, सपोज x इज लेस देन r, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल फोकस पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो क्या होगा, इमेज जो होगी हमारी वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी. ये तो हो नहीं सकता. जब आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है तो क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बराबर होंगे, इन्वर्टेड होंगी. करेक्ट. आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर ही जो है ना उसका पेन, आपका इमेज का पेन आएगा. तो बेसिकली क्या है कि ये है, बट इस क्वेश्चन में क्या पैरेलक्स नहीं होगा. इस
ऑप्शन में देर इज नो पैरेलैक्स, करेक्ट। ये जो आपका अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड आपने रख दिया तो आपका जो बेसिकली पैरेलैक्स है वो, अगर आप लेफ्ट की तरफ आईज को मूव करेंगे तो इमेज भी आपका लेफ्ट की तरफ मूव होगा। और अगर आपने ये है, अगर एफ एफ और 2F के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या होगा, अगर लेफ्ट की तरफ आईज मूव करेंगे तो आपका इमेज जो है ना वो राइट की तरफ। तो दिस इज योर बेसिकली करेक्ट आंसर। टोटल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर आपको पता है ये चीज अच्छी तरीके से, अगर आपके कॉन्केव मिरर के कॉन्सेप्ट्स हैं तो, और ये खासकर ये एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों ने किया होगा क्लास 11th में, क्लास 12th में, तो 1 मिनट का क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, करेक्ट। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें ये 2 पार्टिकल हैं आपके, मास m है एंड इसको एक लाइट स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। होल सिस्टम इज केप्ट ऑन ए frictionless horizontal surface with the string held tight so that each mass is at a center. Now the midpoint of the string is pulled vertically upwards with a small but constant force. As a result, the particles move towards each other on the surface. The magnitude of acceleration when separation between them is this. So, क्वेश्चन को पॉज करके आप एक बार फिर से जो है ना देखिए कि आखिर क्या इसमें पूछ रहा है। तो ये जो पॉइंट P है, इसको वी आर अप्लाइंग ए फोर्स F। तो स्ट्रिंग जो है ना ये आपकी ऊपर उठेगी। सपोज ये पॉइंट P आपका यहां आ गया एंड दिस इज योर Y। नेचुरली ये जो आपके particles हैं, they will come here and this will be the, ये आपकी क्या होगी, A होगी। ये आपको दिया हुआ है X, क्योंकि ये आपका 2X है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ इसमें आपके अगर फोर्सेस हम बात करें तो क्या होगा, ये आपका जो है फोर्सेस आपके देखा जाए तो ये इसमें ये टेंशन होगा, तो इसको अगर हम एनालाइज करें तो हम कर सकते हैं इसको। सपोज ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो F क्या हो जाएगा, F विल बी इक्वल टू 2t साइन थीटा एंड आपका ये जो t cos थीटा है, दिस इज द फोर्स in the horizontal direction and that will be equal to m into a. A is what, acceleration, जो हमें निकालना है। करेक्ट। यहां से इस इक्वेशन से t क्या आया, t हमारा आ गया f अपॉन 2 साइन थीटा। तो t की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो f अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू m a।
तो अगर आप देखो तो a है हमारा f अपॉन 2m cot थीटा। tan थीटा है क्या? tan थीटा इज नथिंग बट y बाई एक्स। अब देखिए tan theta is y by x, correct? And cot theta will be equal to x upon y. And what is x square plus y square is nothing but a square. तो यहाँ पे y है क्या? y is nothing but a square minus x square. इसको हम लिख सकते हैं a square minus x square. तो यहां से हमारा a आ जाएगा, a is nothing but f upon 2m x upon root a square minus x square, and this is your answer. Correct? Did you follow this? So this is your answer. Correct? तो ये आपके सामने स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन है, ये जेईई एडवांस में आया हुआ है. Let us see what is this question. A long hollow conducting cylinder is kept coaxially inside a long hollow conducting cylinder of larger radius. तो दो शेल्स हैं concentric. Both cylinders are initially electrically neutral. Now, we have to tell from this which is correct. A potential difference appears between two cylinders when a charge density is given to inner cylinder. Suppose if we give charge density to inner cylinder lambda, it is the linear charge density, then what will happen? Both are conducting cylinders. So here minus lambda, here plus lambda. So here it is plus lambda. So there will be a electric field between these two cylinders, shells you can, or cylinders you can say, correct? In the portion between the inner cell and outer cell, there will be electric field. Now, when there is a electric field, then naturally there will be a potential difference also. Correct? Because E is related to minus dV upon dr. So, since there is a electric field between these two cylinders, then there will be a potential difference will also be there between two cylinders. So this is correct. I hope this is clear. What will be that electric field? That also you can find out. Suppose if we take a Gaussian surface, suppose this is your R, then what will be the electric field? E into 2 pi r L, suppose this is L, is, what is this, lambda into L, that is Q, upon epsilon 0 due to Gauss law.
correct? So what is electric field? That is lambda upon 2 pi epsilon 0 r, correct? So there will be a electric field. When electric field is there, you can find out dV by dr. You can find out the potential also at any point. Now, let us go to the second option. Second option says a potential difference appears between two cylinders when a charge density is given to outer cylinder. Here, in this case, when charge density is given to outer cylinder, correct? Then what will happen? Inside the cylinder, there will be a constant potential difference because there won't be any electric field. Because if we take any Gaussian surface inside the cylinder, suppose this is your outer cylinder, correct? Now you are giving a charge density to this thing. So inside this, if you take any surface, Gaussian surface, there is no charge. So potential difference will be same. So potential will be constant. You can say there will not be any no electric field. So there won't be any potential difference. This is wrong. No potential difference appears between two cylinders when a uniform line charge is kept along the axis of cylinder. Now, suppose you have the situation like this. This is your small cylinder. This is your large cylinder, hollow. These are hollow cylinders. Now, if you put a uniform line charge kept along the, means here it is line charge is this. Suppose if you put a line charge here, then what will happen? Wherever you take the Gaussian surface, there will be a charge inside this Gaussian surface. So electric field will be there, correct? And since electric field will be there, so naturally, suppose this is your lambda, then here it will be minus lambda. Outer surface plus lambda, it is minus lambda, it is plus lambda. So naturally, here it will be an electric field. And there will be a potential difference. So no potential, so this is also wrong. There will be a potential difference. No potential difference appears between the two cylinders when same charge is given to both the cylinders. If you give, suppose same charge density to both the cylinders, what will happen? Suppose let us draw the cylinders first. This is your outer, and suppose this is your inner.
you are giving a same charge density to this is lambda and this is also lambda. So what will happen? This is your minus lambda and this is plus lambda. Again, there will be a electric field. And due to this, there will be a potential difference. So here no potential difference, this is wrong. So this is also wrong. I hope this is a very conceptual question you understood. If you have not understood, again whatever I have told you, again you go through. Such type of questions, they are being asked now in JEE Mains. So you have to prepare yourself for such type of questions. There should not be any mistake. Correct? If you want, I can again explain all these things, but it is better you take a serious note of this question. Such type of questions are being asked now in JEE Mains. So it is no more a JEE Advanced question, it is now JEE Mains question. So please make a note of it. So this is your next question. Consider a neutral conducting sphere. This is your sphere is there. Positive charge is placed outside the sphere. You have placed the positive charge positive point charge is outside. Net charge on the sphere is then. So due to this positive charge, what will happen? It will induce a negative charge here. But due to this, positive charge will be induced on the other side. Correct? Now let us see what are the options. Negative and net charge on the sphere is then negative and distributed uniformly over the circle. Actually, the first of all, these are induced charges. Correct? But whatever negative charge here is induced, equal amount of positive charges induced on the other side. So net charge is 0. Because you are not providing the charge from outside. This sphere is having the charge, but equal positive and negative charge. So net charge will always be 0. Correct? So net charge on the sphere is there. So this is wrong. Negative appears and this is wrong. Negative, this is wrong. This is correct. Because there cannot be net charge. Whatever charge is there inside this sphere, it is being redistributed. That is all because of the positive charge outside. I hope this is clear. This is the next question. Question number 6, which came in JEE Advanced 2007. The figure is before you. A circuit is connected as shown in the figure and switch S is open. When the switch is closed, the total amount of charge that flows from Y to X is. So first of all, let us see
When the switch is open, what is the charge flowing between these two capacitors? What is the charge which has been accumulated on this? For that, you see, in this circuit, it is having a 9 volt. Correct? What is the C equivalent? Both the capacitors are in series. So C equivalent is 3 into 6 upon 3 plus 6 is basically this 9 is 2. 2 microfarad, sorry. 2 microfarad is a C equivalent. Correct? So what is the charge? Charge is nothing but C equivalent into V, and that is 18 microcoulomb. So that means 18 microcoulomb minus 18 microcoulomb plus 18 microcoulomb and minus 18 microcoulomb. So this is the basically situation when your switch is open. I hope this is clear. Both the capacitors will be charged with 18 microcoulomb charge. Then since they are in series, correct, so charge will be same. Now let us see when it is S is closed, then what is the circuit? Circuit will be something like this. This is your Y point and this is your X point. Correct? Here it is 3 ohm, here it is 6 ohm. Now, this circuit is basically, now the this both the capacitors, they are in parallel. When they will be charged fully, then the current between these two circuits will be 0 and only this circuit will remain. Correct? So what is the current that will be flowing at the steady state? This is 3 plus 6, 9. So that means current is nothing but 9 volt upon 3 plus 6, that is 1 ampere. Correct? So what is the potential difference? That is potential difference across this will be 3 volt and here it will be 6 volt. Correct? Now 3 volt and 6 volt, here
The capacitance is given as 3 microfarad and 6 microfarad. So what will be the charge now? That will be 9 microcoulomb, and here it will be 36 microcoulomb. Correct? So for finding out the charge, let us see. Earlier, suppose this is your this thing and this is your this thing. Earlier it was having 18 microcoulomb minus 18 microcoulomb, and this was having plus 18 microcoulomb and minus 18 microcoulomb. Final charge is plus 9 microcoulomb minus 9 microcoulomb. Correct? And 36 microcoulomb minus 36 microcoulomb. Correct? Now, what charge should be flown from y to x so that this becomes this? So naturally, if we minus 18 microcoulomb is there, so plus 9 coulomb will give you minus final this thing. So plus 9 microcoulomb should flow. Here it is plus 18 microcoulomb. Now it is becoming plus 36. So naturally it is plus 18 microcoulomb. This will give you plus 36 microcoulomb. Means this much charge is required to make it from 18 microcoulomb to 36 microcoulomb. That means this charge is also so our answer is the charge of plus 27 microcoulomb must flow from y to x to make this circuit in the final situation when your switch is closed. So here, what is the answer? Answer is this. So very good problem. So very well, very likely it may come in JEE Mains. So please take a note of it, practice it again and again. Just see what I have done here and just see that if such type of question comes in your JEE Mains, which is coming in April, don't make any mistake. Correct? So question number 1 to 6 I have given in this video. From question number 6 onwards, we will give you the solutions in the next part, probably tomorrow. So go through all these questions. How was this video? कैसा लगा आपको ये वीडियो? जरूर हमसे शेयर करें कमेंट्स सेक्शन में, और इस वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए. थैंक यू very much.